Hello everyone. In the previous video, we have discussed about the iterative statements. In this video, we will be discussing about the transfer statement, and we will also demonstrate that how to use the transfer statement with the for else loop and while else loop. So let me start. So if I talk about the transfer statements, there are three types of transfer statement which you can see in this. That is a break, continue, and pass. So what is the use of break? यदि किसी लूप इटरेटिव स्टेटमेंट्स जो कंटिन्यूअसली लूप चल रहा है आपका और उस लूप को आप ब्रेक करना चाहते हैं मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन इफ यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम द लूप अंडर इट्स लूप प्रोसेसिंग देन यू विल बी यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट. व्हाट अबाउट द कंटिन्यूअस स्टेटमेंट? यदि आप एक पर्टिकुलर इटरेशन को करंट इटरेशन को स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पर डायरेक्टली जाना चाहते हैं आप, देन यू विल बी यूजिंग द कंटिन्यूअस स्टेटमेंट. थर्ड वन इज द पास्ट स्टेटमेंट. तो पास्ट स्टेटमेंट जो हमारा है उसका यूज हम करते हैं जब भी हम हमारे प्रोग्रामिंग में सिंटैक्टिकली वी वांट टू डिफाइन वन ब्लॉक, लेकिन हम उस ब्लॉक में कोड नहीं लिखना चाहते हैं अभी, हम जो कि बाद में कभी लिखेंगे उस कोड को. तो हम उसमें पास कीवर्ड लिखकर उस ब्लॉक को होल्ड कर सकते हैं सिंटैक्टिकली और हमारे पास सिंटैक्टिकल कोई एरर नहीं आएगी. दैट इज व्हाट द यूज ऑफ पास्ट स्टेटमेंट. सो लेट बी सी वन बाय वन. ब्रेक स्टेटमेंट है ना. So suppose we are having one loop that is let me take the example of the for loop here only, है ना. तो for example I am having one list. इस लिस्ट में मेरे पास जो डेटा है वो है 1 2 3 4 एंड सपोज आई वांट टू राइट 1 हियर और मुझे चेक करना है इस पूरे कंप्लीट डेटा में यदि कहीं पर भी मुझे 5 मिल जाएगा तो मैं इस लूप से ब्रेक हो जाऊँ. अदरवाइज इस लूप से मैं बाहर आ जाऊंगा विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट. अदरवाइज दिस लूप विल बी कंटिन्यू. सो लेट मी चेक इट. फॉर आई इन रेंज प्रिंट if I is equal to 5 then break. When I run this code you can see this. The output is 1 2 3 4 and we have used the print statement before the break statement. That is what the reason we are getting the output as a 5. When I run this code here, when I run this code again, so you can see this 1 2 3 4 is the output. When I receive the I is equal to 5, I'm outside from the loop. This is what the use of break statement. Similarly, यदि मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, इस पूरी लिस्ट में जब भी आई की वैल्यू 5 मिले मुझे, वो प्रिंट ना हो, उसके अलावा रेस्ट ऑफ द जितना भी आपका डेटा है, वो लिस्ट का, वो सारा का सारा प्रिंट हो. सो व्हेन आई रन दिस कोड, सो कैन यू सी दिस, I is equal to 1 2 3 4 is the output. When the fifth is there, this iteration is skipped and you are having the 6 and 7 is the output. तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्या है, हम उस पर्टिकुलर कंडीशन पर आकर उस इटरेशन से आउट हो जाते हैं, उस लूप से ही बाहर हो जाते हैं, इसके बाद तो कोई प्रोसेस नहीं हो पाती. लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट में हमें क्या होता है, हम उस पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप करते हैं, रेस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग जो है हमारी कंटिन्यू रहती है ना. लेट मी चेक फॉर द पास स्टेटमेंट. सो व्हाट इज द यूज ऑफ पास स्टेटमेंट, है ना. तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट वन प्रोग्राम वेयर आई वांट टू प्रिंट सपोज ऑड नंबर्स, है ना. सो सपोज n is equal to int input, writing the enter the data, and for I in range of n, जो कि n की रेंज है, इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, if I mod to not equal to 0, then what I need to do, equal to 0, then what I will do, print, else what I need to do, else I will do nothing. So what I will write, I will just use the pass statement here. Suppose when I run this code, I am passing here 10. So when I run this code, name range is not there. Okay, so spelling mistake is there. So I have to write the range here. range. Fine. Okay.
So let I run this code again. The limit is n colon. So if I mode to, can you see this? 13579 is the output here, and the else section is doing nothing. So this block is represented by the pass. So these are the three types of transfer statement in Python. One is the break, that is used to break the current loop, and second one is the continue, that is used to skip the current iteration, and third one is the pass, which is used to create the empty block in your code. But there is one important condition. Suppose I'm having one situation where I want to check that my loop is containing the break statement, but it get break condition successfully or not, or my loop is executed completely. तो इस चीज को हम कैसे करेंगे, है ना? तो इसको करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर एल्स और while else ब्लॉक, है ना? So let me discuss about the for else block, for else loop. Okay, what is happening? Suppose um, I'm having one item tray, and this item tray we are having number of items. Suppose the items are 10, 20, 30, and 40, and suppose there is 500 items also. What I want to do, I will check for individual item in our item tray for the order processing. Suppose we are having the e-commerce website and we are taking the orders, and the item tray we are maintaining for individual item the count of number of items available there, है ना? लेकिन यदि कोई ऑर्डर हमारे पास नंबर ऑफ अवेलेबल आइटम से ज़्यादा का आता है तो कहीं ना कहीं हमें उसे ब्रेक करना पड़ता है. अदरवाइज हम सक्सेसफुली यदि पूरी रिक्वेस्ट को सर्व कर सकते हैं तो दैट शुड बी नोटिफाइड टू अस. तो वो किस तरीके से करूंगा? सपोज मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ आइटम काउंट is greater than suppose 400. What I will do, I will print here, suppose I am taking this here 400 instead of 500. Suppose print, so I will write here we cannot process the order, and we will break, क्योंकि हम उस ऑर्डर को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, हम ब्रेक करेंगे. इसके अलावा मैं लिखता हूँ else print the orders done successfully. The orders done successfully. What does it mean? यदि मैं इस कोड को रन करता हूँ, when I run this code, can you see the output is if item is greater than 400, है ना? So just a minute, greater than request is there. So when I take this 500, so you will check this, we are having we cannot process the order. मतलब जो आइटम का काउंट यदि इस कार्ट में आया था हमारे पास आइटम ट्रे में, उन्होंने 400 से ग्रेटर देन चेक करा, क्या आइटम 400 से ग्रेटर देन रिक्वेस्ट हुआ है परचेस करने के लिए. सो यू कैन सी द 500 इज देयर. सो वी से दिस वी आर नॉट हैविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द 500 items because we cannot process more than 400 for any kind of item. So break will be executed here, and else section will not be executed. Instead of this, if suppose 399 is there, all the orders are, suppose 300 is there. When I run this code, so you can see this, no item is having more than 400 value. So this item tray contain only till the 300 items, so that can be given to the customer. क्योंकि हमारा जो जो इन्वेंट्री सिस्टम है या जो रिपोजिटरी है इनके पास रखा हुआ है सामान है जो भी है, उसके काउंट उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है. सो दे हैव सर्व. लेकिन ये पूरा किस तरीके से सर्व हो चुका है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चला है? सो वी विल बी यूजिंग द एल्स ब्लॉक. So it means that in a for else loop, if your else block is successfully executed, it means that your for loop is not breaked. मतलब आपके for loop में break statement execute नहीं हुआ है, तभी आपका जो है
एल्स सेक्शन जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। सिमिलरली यदि मैं सेम एग्जांपल को व्हाइल लूप के थ्रू करने की कोशिश करता हूँ, while else loop, suppose we are having this item tray, same example is here, and suppose I take while I is less than the length of this item tray, and here I am initializing the I is equal to 0. So you can see while I is less than length of item tray, I will be referring the individual item. So what I will do, if item tray ith index item is greater than 400, what I need to do, I will be writing this statement only, break, otherwise we will have the else block that will contain the same data. When I run this code, okay, it's going for the infinite situation. Just a minute, kernel need to be interrupted. Here what I need to do, मुझे यहाँ पर I is equal to I plus 1 करना पड़ेगा, otherwise वो इनफाइनाइट लूप में जाए। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई सा भी ऑर्डर 300 से ज़्यादा नहीं था और हम 400 की कंडीशन को चेक कर रहे थे। इसका मतलब सारे ऑर्डर सक्सेसफुली डन हुए, इसलिए यहाँ पर क्या है, ऑल द ऑर्डर्स डन सक्सेसफुली। इंस्टीड ऑफ दिस सपोज वी आर हैविंग द सिचुएशन फॉर 500, सो व्हेन आई रन दिस कोड यू कैन सी दिस वी कैन नॉट प्रोसेस द ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, यदि एक भी बार ब्रेक हो रहा है इस लूप में या लूप से हम ब्रेक होकर आउट आ रहे हैं तो एल्स सेक्शन हमारा जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो दैट इज व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसफर स्टेटमेंट with the while and for loop. So we are having with the help of these transfer statement, while else loop, for else loop. So for this iterative statements video, this is all from my side. Thank you.